Very good morning. Good morning, sir. So everyone audible? Yes or no? Shangita, Roshan. Yes. Yes, sir. Mhm. So first wait, just wait. Now everyone visible on my screen. So everyone, first of all, today I have your first class. So I'll take your class and I'll give training purpose full stack development using Mern stack. So basically myself, Shui Shatra, I have an experience of 5 years more than real industry and also faculty of the project of me and set base. So guys, everyone, which college? जो आज नया ज्वाइन किया है, which college and which stream? One by one. Good morning, sir. Which college? Mathuram? This is Muthuram from Government College of Technology, Coimbatore, sir. Okay. And also Ritik, Gauri. Hello, sir. This is Gauri Shankar, Assistant Okay. Professor from Government College of Engineering, Coimbatore. Okay. And also Amrit, Raj. Which college and which stream, everyone? Someone join 1 minute. Which one? So which stream? Guys, write in a chat box. So everyone comfortable Hindi English? Yes or no? Please tell me. Hindi English comfortable? Yes or no? Sir, English is okay. Okay. And Mathuram, Badavat, and Shavi, Mita, Arni, Ritik, English, Gautam. okay, sir. Okay. So we are learning about Hindi English both language. Okay. But on maximum time I convey is English and Hindi. Okay. So first of all, everyone choice Manstack course, but before class, oh, okay, 1 minute. Just, Shubhojish, Good morning. good morning. So which stream? MC MC. Which कौन सा college आपका? Techno India. Techno India. Okay. ठीक है, just wait guys. Friend student coming, then I'll start. Wait, just wait 2 minutes. Okay. First of all, I'll give some information, important rules before classes. Okay, offline and online. Both students, listen carefully. So every class started 10 a.m. morning, and as per your schedule. Everyone follow as per your schedule. Okay, light. Now clear. Yes. And also next step, after class, I will provide it class recording. जो classes में topic cover किया जाएगा one by one.
each and every topic will cover. And also everyone follow your syllabus. Everyone online students, everyone follow your syllabus, course curriculum. Everyone follow, yes or no? Reply first. Everyone follow, yes or no? Offline syllabus follow किया है? Yes, sir. Okay. कल ही तो जाना है. So guys, everyone go the Ardent website and HD website and follow the syllabus. So I will share your syllabus. First of all, we have completed the syllabus regarding of basic to advanced level. Okay. First, that scenario, you'll go any interview. You'll go after classes, after semester, after courses completed, then goes the interview. Interviewer asks, first of all, not a coding based question. First asks you theory based question. So then इसके लिए बेसिक टू एडवांस लेवल क्लियर होना जरूरी है. सो जो चीज हम लोग टॉपिक कवर करने वाला इधर, we can cover any topic, anything just like HTML, CSS, React, as a backend server, API, any topics particular. First of all, know what is the full form and why needed this topic and how to implement in your real life project. Okay, step को follow करना है. And after we will working practical based work, real life practical based work we implement in project, live project. तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे चीज आप लोगों को कंप्लीट होगा. एंड डेली बेस क्लास आफ्टर you'll give, I'll give class recording, online class recording, where you'll get class recording in your WhatsApp description. Everyone check the WhatsApp group, anything just like this group, the read more and the notice board. This very, very important part is the notice board. Open. And day one, just suppose today SOT 7/1/25. Okay. So day one class recording provided after evening. At night, after 10 p.m. I will provide this class recording. Where you check? In notice board. Okay. Second, assessment and project titles. So after two class, now today class basically introduction and installation. How to set up your system, how to set up your project directory, and also installation part, introduction part. Introduction part is very, very important for interview. Why needed, why not needed, its advantage, and little bit major topic. Okay. And after provided, this is very, very important, the study material. Everyone just study, go through study this types of step by step all code in here. Study material about of full stack development using Mern. Total course related study material इधर पे available है. Just class notes. This is very, very important. Okay. Everyone check. So now you cannot understood this type of code because first day, but just go through. Okay, day one wise, and we will follow the class your course content wise day wise I'll cover. Okay, and any student communication related, as a project related, as a coding related, any doubt, anytime you ask me. So just like after now class, I will discuss what is HTML, why needed HTML. It's already told, but any one student just like a online student 14, उसमें से कोई 2-3 students समझ में नहीं आया, तो you can again ask, then I'll go. पहले सारे चीज को क्लियर करना है, then आगे जाना है, तो सबको लेके ही चलना है. तो ऐसे नहीं है जो पूरा स्क्रिप्ट हो जाएगा. तो एक बात और एक इम्पोर्टेंट, class joining, daily based class joining is mandatory. And before class joining, everyone
सेटअप लैपटॉप एज ए डेस्कटॉप, जो भी आपका लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है सिस्टम को आपको ऑन रख के क्लासेस ज्वाइन करना है. नॉट अलाउ मोबाइल फोन. मतलब क्लास ज्वाइनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है जो मोबाइल से क्लास ज्वाइन करता है. नॉट अलाउ. ओके, everyone understood online student this rules? Yes or no? Anybody any doubt, any query, feel ask me. Write down your chat box one by one. Write down your chat box. Everyone understood? I told the all rules and regular criteria. Okay, Gauri. Offline. One name. Navdeep. Navdeep. Okay. Which stream, Navdeep? Okay. MCA. Fine. Finally, year. Pass out. Pass out. Okay, very good. Okay, Varsa. Chalo. So today I'll start the topic. First topic. The class document, class notes everyone follow. Day one. Okay, just a minute. I'll open these notes. Okay, 1 minute. Day one. Today topic is introduction and installation. Topic one. Why need full stack development? Why need full stack development? Anybody tell me? Why learning and why need full stack development? So why are you choice master course? Tell me. Anybody? You can try. Now you can try it. Why need? Mathuram, Gauri, Vavat, Shavi, Mithali, Shadni, Roshan. Why your choice full stack development using Man? बहुत सारा टेक्नोलॉजी था, तो स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी को ही चॉइस किया. एंड ऑल्सो नवदीप. Okay, very good for developing web application. So very good answer. Web application development के लिए choice किया है. But अलग कुछ answers? गौतम, संगीता, तानिश, पूर्वाशा. Why need? क्यों choice किया है? Because everyone know nowadays I'll purchase, I'll buy some items, product. So which through the online website through. Online website too. Now it is all working digitalized. Nowadays Indian all working in digitalized. जब भी आप कोई बस टिकटिंग या फ्लाइट टिकटिंग जो भी बुकिंग करो से ऑनलाइन थ्रू. ओके, बैकएंड. ओके, वेरी गुड. गुड ट्राई. सो जब भी कुछ जस्ट लाइक एक रियल लाइफ एग्जांपल, you can order any shoes. It's like you like any Nike shoes, then you go the website, Nike website, then order it, then deliver it. So ये जो through we needed the internet and we needed the all stack based system. We needed the all stack based system. Which is a stack based system? So first, just like I'll create a website as a Nike website as an admin. आप लोग क्या users? You'll go, that's my website, and first of all sign up, register, then login. Then after you'll like all type of product. You'll watch all type of product, just like उसमें से कोई एक shoes पसंद आया. Then hello. Good morning, sir.
Just wait one. Sorry, guys. Call. Okay, now let's start. So टोटली जो वर्क हो रहा है किसमें, एक ऑनलाइन थ्रू, उसके लिए मुझे कुछ सिस्टम चाहिए. क्या चाहिए? एक टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें हम यूज करके ये मेक प्रोडक्ट को already purchase and also buy, selling anything. Just like nowadays, there's a famous website is a stock market regarding. Anyone know the stock market related now a trending website. So you'll invest 1,000 and get 5,000, and also we lost the prediction based. Totally working is prediction based, algorithm based. Totally working on algorithm based. Another, you choose that you start charts, shoes, any type of product, then you can purchase. So this types of website you will use. This website is a two type. Website is a two application. First is a web application, already told one student, and also another is a mobile application. Two type application is a web application and mobile application. So we needed two type application. So now your course working on web application, not a mobile application, but you already done web application. Also in future you can integrate the easily mobile application, because हर एक चीज का लॉजिक मेरा सेम है. क्या लॉजिक्स ऑलवेज सेम, बट syntax is different. Syntax is different little bit. Okay, so that's needed the website. So how can I develop in your website? Just like I want develop e-commerce based website, how can I develop? Step, anybody know? Front-end, पहली फ्रंट एंड नहीं, पहला जो स्टेप होगा. design. ओके, 1 minute. फर्स्ट एक एग्जांपल, जब यू कैन बिल्ड एनी फ्लैट बिल्डिंग, सो प्रीवियस प्लान क्या होता है? फर्स्ट प्लान इज प्लानिंग. फर्स्ट पॉइंट इज अ प्लानिंग. सो विच कौन सा प्लेस में मुझे फ्लैट बनाना है, किस 2 BHK 3 BHK 4 BHK एंड कितना फ्लोर होना होगा, इसमें सारे उसका प्लानिंग होना चाहिए. इसके लिए आपका मनी भी एस्टिमेट भी अरेंज करना पड़ेगा एज ए लाइफ ऑफ लाइक ए. उसमें जो फ्लैट मेकर उसको उससे भी आपको एक प्लानिंग रखना पड़ेगा. कौन सा फ्लैट कहाँ पे होगा, किस रिलेटेड होगा, कैसे होगा, ये सारे प्लानिंग. सेम टाइप्स ऑफ यू बिल्ड वेबसाइट. First needed a planning. So which type you build, which type of website you build, which type of website, first point. Second, we needed which type of developer. एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए नॉर्मली आप खुद अकेले नहीं कर सकते हो. सो नीडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपर. कोई फ्रंट एंड में काम करेगा, कोई बैक एंड में काम करेगा, एंड ऑल्सो कोई यूआई, मतलब ओनली डिजाइन बेस्ड काम करेगा. फिग्मा बोलो, वर्डप्रेस बोलो, एनीथिंग उसको डिजाइन बेस्ड काम करेगा. इसका पार्ट प्लानिंग. नेक्स्ट, हाउ मच कॉस्ट नीडेड develop this type e-commerce based website, or financing based website, management based website, different type of website. कितना कॉस्ट जरूरी है, बिकॉज उसका मेंटेनेंस भी होता है. ये सारे चीज को आपको कवर करना है. ओके, गॉट इट. तो इसके लिए मुझे चाहिए सिस्टम. सिस्टम that's named web application, web and also mobile application. First of all, why learn full stack development? So your answer is, I need the full stack development because I will create dynamic website. I will create dynamic website. So how many type of application first? How many types of application? Anybody know? Desktop. ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है. देखो सब लोग तो प्रोजेक्ट बना लेते हैं एंड कोड भी कर लोगे आसानी से, बट ये क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है. तो आंसर डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन. हम शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इसको आप नोट कर लेना. ऑलरेडी आपका स्टडी मटेरियल में सारी चीज मेंशन किया है. एंड थर्ड इज मोबाइल एप्लीकेशन. What is the desktop application?
What is the desktop application? The desktop is the daily like Just like Word, Excel. That's your desktop application. You cannot create the dynamic way. Okay. And the web and mobile, both static and dynamic. You will create the static application and also dynamic application. Web application run on browser. Which device? Run on browser, not running the app. So now you can integrate the app, mobile device, just like any SDK toolkits, emulator through any device. So then you can also run in your web application in your mobile device. So iOS supported, also Android. Normally phones के लिए Android and iPhone के लिए iOS. ठीक है. It you know type of application. So nowadays we are working on two type application properly. Which application? Web and mobile. But your classes will be which base? Web application bit, not a mobile application bit, but you can also watch your output as a UI output as a mobile device base, but not working mobile base. Just you can visible, but not working dynamically. Then you working the dynamically, then you run React Native. So Android as a Flutter, quality, anything. Okay. So first of all, do you know first question in interview first question, how many type of layer? How many type of layer in full stack development? Anybody know? This is a very, very important question. For interviewer asks you, how many types of layer? Tell me. Online student, offline. How many types of layer? You already built a website. You have no idea of the website, front end, back end. But how many types of layer? This layer base, two layer, no. Front end, back end, okay, three layer. Very good answer, three layer. Which, how many types? Three layer, which layer का नाम क्या है? First is PL. Second is BL. Third is DB. Okay. What is the PL? PL means presentation layer. One by one I will describe. पहला हम लोग PL के related बात करने वाला है. PL is a presentation layer. What is the presentation layer? Just like I'll present my screen. Everyone visible this screen. That is a presentation layer. I'll present this screen. That's called static, not now dynamic. That's part is visible static. That's scenario. That's called client side. That's called client side. Client side. Sorry. Client side. What is the client side? User visible source code. मतलब यूजर जो सोर्स कोड को देख पा रहे, यूजर विजिबल सोर्स कोड एंड क्लाइंट रन ऑन ओन ब्राउजर. कहां पे रन होता है? खुद का ब्राउजर में. दैट्स इज अ स्टैटिक बेस वेबसाइट. दैट्स पार्ट इज a front end. Which part? Front end. That is a static application. Static web application. That's called static web application. Front end. Now, BL is business layer, business logic layer. There's a business logic layer. That's called backend. What is the backend? Server side. Server side definition. Anybody know? Server side definition. Online student. Database front end backend. Very good, Purvasa. Online student, which accepts the request from client. Very good, Bhavna.
भावना यू ऑलरेडी टोल्ड, भावना ने बोला है जिससे एक इक्वल एक्सेप्ट कर पाएगा, हैज ए वर्किंग फ्लो बता रहा है, बट वेरी गुड, बट थ्योरी बेस यू कैन आस्क इंटरव्यूअर एंड एनी company's employee. So what is the business layer? Server side is user not visible source code. Why this logic? And it run on server, खुद का सर्वर में रन होता है, is and also you cannot visible source code. Use a client visible source code but server not visible source code. इसका मीनिंग क्या होता है? What do you meaning? जस्ट लाइक आप वेबसाइट को देख पा रहे हो, जस्ट लाइक एग्जांपल ये देखो, बट यू कैन नॉट विजिबल द व्हिच लिंक में जो एज ए मान के चलो मैं ओपन कर रहा हूं गूगल, मतलब क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, ओके ओके, एंड open the interface, request send and you'll give response where Google search किया ना, the request send किया, then response क्या मिला, वेबसाइट सर्वर google.co.in जो प्रोटोकॉल में रन हो रहा है, you will response but you cannot visible, you know, meeting link, mail link, anything you cannot access direct because server side working asynchronous way, सर्वर साइड वर्किंग एसिंक्रोनस है, जो बैकग्राउंड में लोडिंग लेते रहेगा, यू कैन नॉट विजिबल, ओके, दैट्स कॉल्ड सर्वर साइड। तो वेबसाइट में जब तुमको कोई पेमेंट रिगार्डिंग पेमेंट मेथड बनाना है, एज ए मेल बनाना है, खुद का जीमेल, ओटीपी भेजना है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन का सारे डेटा, जो जो एक वेबसाइट मान के चलो ऑलरेडी टोल्ड ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट में 100 बंदा ने रजिस्ट्रेशन किया, उसका सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगा, बैकएंड में, मतलब रिक्वेस्ट ऑफ व्हेयर यू सेंड रिक्वेस्ट, जब आप कोई जस्ट लाइक आपका पास एक फॉर्म है रजिस्ट्रेशन, सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड हो रहा है, आपका सर्वर में, सर्वर में रिक्वेस्ट सेंड होके सर्वर का बॉडी का अंदर सेव हो रहा है, कहाँ पे, सर्वर का बॉडी का अंदर रिक्वेस्ट को सेव किया जा रहा है, देन यू विल गिव रिस्पांस, आपका ब्राउजर में मिल रहा है, ये सिनेरियो में पूरा वर्क होता है। एंड जितना भी डेटा स्टोर होगा कहाँ पे, वेयर जितने डेटाबेस, बिकॉज डेटाबेस में मल्टीपल store the multiple user information, database store multiple user information, so server side is a backend, backend create dynamic web application, जब तक फ्रंट एंड में था क्या स्टैटिक, जब आप बैकएंड इंटीग्रेट किया उसमें डायनामिक का मतलब यूजर इनपुट जैसा, मतलब आप चाहो तो स्टैटिक में क्या होता है, आप लॉगिन करोगे, आपको खुद से आईडी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड, तभी लॉगिन होगा, ऐसे वेबसाइट में होता है नहीं, मान के चलो मैं एक वेबसाइट बना, आप लाखों यूजर आके उसमें रजिस्ट्रेशन करेगा, लॉगिन करेगा, तो उसको डायनामिक मतलब सारे मल्टीपल यूजर के इंफॉर्मेशन भी यूजेस कर पर एक्सेस कर पा रहा है, और स्टैटिक में आप खुद ही एक्सेस कर पाओगे, और किसी को दोगे तो उसी को आपको पासवर्ड और यूजर नेम बताना पड़ेगा, not a full fetch website. Then you will convert static website to dynamic website, then is a full fetch full stack development website, full fetch full stack development, okay. And also store the database, db means database, everyone understood? Working client send request where client architecture working flow draw कर दे रहा हूं, client request server request accepted and fetching, server request accept and fetching data store, fetch लिख दे रहा हूं, fetch data store मतलब इंफॉर्मेशन व डेटा जो भी लिख दे रहा हूं, info मतलब इंफॉर्मेशन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, info where store database db and will give response कहां पे मिलेगा आपका, ब्राउजर में, मतलब क्लाइंट में, response in your browser means client में, क्लाइंट साइड में आपको फिर रेस्पॉन्स मिलेगा, इस रिलेटेड ही आपको वर्क करना है, ठीक है। Everyone understood? Online reply in your chat box and offline.
Anybody need doubt? Please ask me. And और एक important बात है क्लासेस में communication must be important end to end. मतलब मैं एक चीज टॉपिक बताने जा रहा हूँ, then you cannot understood, not this is not good things. Okay, so communication must be important. Atul, Vabna, Shadni, okay, Chovi, Gauri, Mitali, Purbasha, Roshan, Shangita, Tanish, and Navdeep. Yes. Clear? Okay. Thank you all. Next point. This is all very very important. How many types of website? बताओ तो कितना टाइप का वेबसाइट होता है? No. Website category. Website বা web application. Web application category. कितना टाइप का एप्लीकेशन होता है? Web application. देखो जो चीज आप सीखने जाओगे उससे पहले बेस क्लियर होना जरूरी है, तभी आप वेबसाइट बना पाओगे. आपको मैं बता दिया नवदीप, so please you can build a e-commerce based website, and online student please build your tour and traveling based website, and also mutual fund based website, net banking based website. Already now you also help in ChatGPT and also Google, right? So already done, but you cannot clear the basic theory. So how many type of application? Tell me. मतलब how to application, sorry, web application category. कितना टाइप ऑफ वेबसाइट होता है? नंबर 1, मैनेजमेंट बेस्ड वेबसाइट. व्हिच बेस? मैनेजमेंट बेस्ड. इसको मैं ट्रेडमार्क ही रखूंगा, मैनेजमेंट बेस्ड. नंबर 2, ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट. ई-कॉमर्स. नंबर 3, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. नंबर 4, health related, health care. Actually, 1 minute. Health. Healthcare. Healthcare. Number 5, फूडिंग रिलेटेड तो हर में ही फूडिंग तो आपको फूड डिलीवरी. वेरी गुड. फूड डिलीवरी. नंबर 6, बेस्ट एंड टॉप ट्रेंडिंग वेबसाइट स्टॉक मार्केट, इसमें एल्गोरिदम भी वर्क करता है, हर जगह पे भी यूज किया जाता है. क्लाउड बेस्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट का नाम होता है. स्टॉक मार्केट. स्टॉक एंड फाइनेंस. ओके, तो आप लोग बताओ, सारे वेबसाइट में ग्रीन जोन में रख दिया और मैनेजमेंट को मैं रेड जोन में रख दिया. क्यों? आप तो कॉलेज पास आउट हो ना नवदीप, एंड ऑल्सो ऑनलाइन स्टूडेंट. आप लोगों का कौन सा ईयर चल रहा है? मथुरम, चांदनी, भावना, गौरी. टेल मी व्हिच ईयर? 4th ईयर. बीटेक. स्ट्रीम क्या बीटेक है? ओके, बहुत बढ़िया. सीएसई ना आईटी डिपार्टमेंट ना अलग ईसी वगैरह भी हो सकता है. ईसी. ओके, सीएसई डिपार्टमेंट में कोई है सीएसई का स्टूडेंट इधर पे? ईसी ठीक है. आपको ईसी मतलब आपको कोडिंग आना जो एकदम कंपलसरी.
मतलब ये तो आना चाहिए। ओके, सीएससी डिपार्टमेंट कोई है, ये सब नो? ठीक है, मतलब इसी डिपार्टमेंट सब। ओके, तो फाइनल ईयर, तो आप लोगों की ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैनेजमेंट में जो वेबसाइट नॉट अप्रूव नाउ इट इज जस्ट लाइक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ पोर बेस्ड वेबसाइट, नॉट मार्केट में इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैं रेड मार्क्स दिया। इस वेबसाइट नॉट अप्रूव्ड, इसका डिमांड भी बहुत कम हो चुका है, द लो कॉस्ट, मतलब not you will not get a benefit. This is a real based website, but website is present actively, but it's a real based website, so इसलिए रेड मार्क. So you cannot choose the management based project, you also choose this based type of project. Okay, tour and travels, इसको मैं हाँ ट्रैवलिंग बेस्ड चलो हो सकता है, और उसमें हाँ टूर एंड ट्रैवल बेस्ड, सही थी, टूर एंड ट्रैवल। इसमें बुकिंग बेस आएगा, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बस टिकट बुकिंग सारी इसमें ही आ जाएगा। वेरी गुड। तो नेक्स्ट, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट। व्हाट इज ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट? इसमें ऑनलाइन आपको सामान मिलता है। वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट डेफिनेशन। टेल मी, माइक को अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। एनीवन? मथुरम, गौरी, भावना, मिताली, चांदनी, छोवी। व्हाट इज ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट? आप लोग तो डेली बेस ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हो, just like you can you like any shirts, shoes, any cosmetics things, any products things, so always using e-commerce based website जैसे मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मेसो, बहुत सारा वेबसाइट, नाम अभी बताने जाओ तो सुबह हो जाएगा। मतलब you already live daily life, you always use this type of website, that's called e-commerce based website. E-commerce based website provide all daily life based and shopping based needed things. Okay, and next, social media based clone, WhatsApp clone, Twitter, Instagram clone is a social media based website. Book my shoe, movie ticket related, this is very popular based website. Okay, and healthcare, most important and most valuable website, healthcare, because healthcare website provided health facility, insurance types of, and also your premium based health security benefit, and healthcare website also provided medicines, hospitalized admission, जो भी आज दुनिया ऑनलाइन थ्रू ही कर पाओगे घर बैठ के। आपको कोई दवाई लगा गया, मतलब यू नीडेड द मेडिसिन, so already you purchase any healthcare website just like Apollo 24/7 hours website Apollo, अब उसमें गया वेबसाइट में, देन यू कैन आल्सो परचेस मेडिसिन, जो टाइप्स ऑफ मेडिसिन सिलेक्ट करके कैटेगरी बेस, देन उस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हो, आपको डिलीवरी करके दिया जाएगा, डिलीवरी बॉय आके। तो ये हेल्थ केयर वेबसाइट, मतलब ये वेबसाइट के ऊपर आपको काम करना है। फूड डिलीवरी, नाउ ट्रेंड वेबसाइट जोमेटो, ब्लिंकिट, और बहुत सारा, टोमेटो बोल के भी एक वेबसाइट रिलीज हुआ, मैं कोलकाता में देख रहा हूँ, एक टोमेटो बोल के, जोमेटो का एक रिलीज वर्जन है। उस दिन तो ट्रैवलिंग मतलब बाइक से आ रहा था, एक बैग, जो डिलीवरी बॉय होता है ना, उसका बैग में लिखा था टोमेटोस बोल के। हम क्या वेबसाइट है, मतलब डिलीवरी बेस्ड वेबसाइट मार्केट में बहुत बहुत रिलीज हो रहा है, मतलब डे वाइज बहुत, मतलब इसमें ही काम होगा आगे जाके कंपनी में, जब आप एज ए इंटर्न, एज ए सीनियर डेवलपर तो नहीं हो पाओगे, आप डायरेक्ट पहले इंटर्न एज ए फ्रेशर्स अब जाओगे, तो आपको इस बेस वेबसाइट के ऊपर ही आपको काम करना है। तो इसका
बारे में जो आउटलाइन नॉलेज आपको जानना नीडेड है. ओके. And stock market. So already know stock market is a trending website. There's a grow and interior and different types of stock market related website. Stock market related website like a working on algorithm based. Stock market website working on algorithm based. जैसे upper bound, lower bound, जो prediction depend on your. You can just like क्या बोलूं इसमें स्टॉक मार्केट में टोटली आपको एआई इंटीग्रेट करके ही काम करना है. देन वेबसाइट टोटली वर्किंग एआई इंटीग्रेशन बेस. ओके. सो आप चाहो तो ये सारे वेबसाइट के साथ आप एआई भी इंटीग्रेट कर पाओगे. एआई इंटीग्रेशन मींस एज पर यू कैन डेवलप एनी वेबसाइट. उसमें आप कुछ बोट टाइप्स ऑफ कुछ इसको उसमें क्या बोलो एडजस्ट कर दिया. ऑटोमेटिक आपका टाइमिंग जनरेट करके दे रहा है. ऑटोमेटिक आपका कितना प्रोडक्ट परचेस हो रहा है ऑटोमेटिक बॉट सिस्टम आपको प्रोवाइड कर दे रहा है. कौन यूजर ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया उसका सारी इंफॉर्मेशन बॉट से मिल जा रहा है. एआई इंफॉर्मेशन. सो एआई इंटीग्रेट भी कर पाओगे क्लाउड बेस. ठीक है. बहुत सारा क्लाउड बेस में टेंशन फ्लो जावास्क्रिप्ट में इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है. और नहीं तो मॉडल थ्रू हम लोग जो इसको इंटीग्रेट किया जाता है. ये तो क्लाउड बेस में पड़ गया. आपका तो क्लाउड बेस नहीं है आप लोगों का. तो जिसका क्लाउड बेस रहता है मॉन्स्टर तो उसको हम लोग ये कराते हैं एआई इंटीग्रेशन. चाहो तो लास्ट में थोड़ा दिखा दूंगा एक बेस. एंड टूर एंड ट्रैवलिंग was famous well traveling base holiday room booking and hotel flight every booking based website. This is important part. ओके. ये सारे वेबसाइट में हमको काम करना है. बट वेबसाइट को अभी क्या आपका मेरा पास वेबसाइट का बारे में नॉलेज आ चुका है. सो एवरीवन गेन द वेबसाइट नॉलेज. बट हाउ कैन आई डेवलप अभी आएगा. हाउ कैन आई डेवलप. इसको क्लारा चेंज करके ब्लैक कर दे रहा हूँ. फ्रंट थोड़ा हाउ कैन आई डेवलप. हाउ कैन आई डेवलप. इसको डेवलप कैसे किया जाए बताओ. डेवलप के लिए मुझे वी नीडेड द टेक्नोलॉजीज. Which technologies already know. कंटेंट में क्या टेक्नोलॉजी आपको जानना जरूरी है. HTML, CSS, JS. Wait. Framework. Framework. 1 minute. हाँ भावना वेरी गुड. अभी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी क्यों लिख रहे हो. अभी तो मेन आपका कोड में आ गया. आपका कोर्स का मेन टॉपिक ये इंटरव्यू में पूछता है. अभी इसमें से बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है. यू गेन द मोर नॉलेजेस दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये प्रीवियस पार्ट तो बेसिक नॉलेजेस यू गेन बट इज एडवांस एंड इंटरमीडिएट लेवल नॉलेजेस. सो व्हाई नीडेड मानस्टैक. अभी आपका आंसर मिलेगा. लाइब्रेरी. ओके. फ्रेमवर्क लाइब्रेरी. ठीक है. लाइब्रेरी ना सॉरी ओके. लाइब्रेरी फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी. इसको चलो लाइब्रेरी में ऐसे क्यों दे रहा है. लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क एंड दूसरा में होगा बैकएंड. व्हाट इज बैकएंड. मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी बैकएंड. बैकएंड को भी सेम आएगा ना. क्या आएगा. फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी एंड इधर डेटाबेस. सबसे पहला क्वेश्चन बैकएंड में PHP होता है राइट और जावा होता है राइट और .NET होता है बहुत सारा डॉट और हाँ इसे रखता हूँ. और डेटाबेस 2 टाइप. डेटाबेस कितना टाइप का होता है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटाबेस.
सबको पता है, सब लोग 2 ही बोलोगे, राइट? मैं बोलूंगा 3, कैसे होगा? बट लॉजिक 2 ही होता है। आप क्रोम में भी सर्च करो, हर जगह 2 में 3 बोलूंगा, क्यों? इसका भी लॉजिक है, बता रहा हूँ 3 क्यों बता रहा हूँ। सबको तो पता है सीक्वल, सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर, क्वेरी लैंग्वेज स्ट्रक्चर बेस। दूसरा पता है सबको नो सीक्वल, और ये डेटाबेस होता है उसका लोकल डेटाबेस, जो लोकल स्टोरेज में काम किया जाता है, जिसमें मेरा पास बैकएंड मोंगोडीबी सीक्वल नहीं है, तब डेटा कहाँ पे स्टोर करोगे? जेसन सर्वर का डेटा वेयर? लोकल स्टोरेज। नेटवर्क में जाके आपको कंसोल करके चेक करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस आप लोग इस कभी बुक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ये चीज। गूगल में रहेगा, बट उतना इन डेप्थ में नहीं रहेगा। बुक्स में आपको और भी डेप्थ में मिलेगा। विकिपीडिया वगैरह पढ़ोगे, स्टडी होता है ना, जैसे यू कैन स्टडी द ऑफ द पोएम्स एंड न्यूज़पेपर, सेम लाइक्स all you gain the all in-depth knowledge, so like read it, the read book, क्या नहीं, read बुक पढ़ना जरूरी है। किताब जितना पढ़ोगे आपका नॉलेज एक्सटर्नल लेवल में मतलब गेन कर पाएगा। लोकल डेटाबेस, ये पता है लोकल डेटाबेस, लोकल स्टोरेज जिसमें होते हैं, बाद में आ रहा हूँ डिस्कशन में। तो एक चीज मुझे सिनेरियो में बताओ, HTML का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। HTML का फुल फॉर्म सबको तो पता है, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन, बट क्वेश्चन ही नहीं है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बट क्वेश्चन तो सबको ये पता
Now online student, am I audible? Just network issue. I'm facing the network issue now. Okay. Okay, now audible everyone? Yes or no? Anyone visible my screen? Okay. चलो अभी से चाहिए हो गया. So we are discussion which topic? Which related? It's like HTML. Why call hypertext markup language? Anybody tell? Please unmute your mic and reply. Why call hypertext markup language? This is very easy questions. Final year and also pass out. बोलो बताओ. इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपका एक लिंक में रहता है, हाइपर टेक्स्ट में रहता है. पूरा बहुत एकदम परफेक्ट है. मतलब 30% परफेक्ट आंसर. पूरा परफेक्ट एक्सप्लेन कौन कर पाओगे इसको? Why called? It's links in text with other document. Very good, Mitali Kumari. मतलब you can link one page to another pages using HTML tag. That's called hypertext markup language. Uses tag. Then complete answer. Okay. So why did a hypertext markup language? We needed the hypertext markup language. Create structure. जब भी आप ड्राइंग करते हो यू कैन स्केच. पहले क्या करते हो? यू कैन ड्राइंग कंपटीशन फर्स्ट यू कैन स्केच देन आफ्टर गिव कलर्स. सेम वेबसाइट में भी फर्स्ट क्रिएट स्ट्रक्चर देन आफ्टर क्रिएट लेआउट. लेआउट मींस स्टाइलिंग प्रोवाइडेड आफ्टर स्टाइलिंग. फर्स्ट आपको वेबसाइट में क्या करना है? स्ट्रक्चर बिल्ड करना है. देन आप उसमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करोगे उसको खूबसूरत दिखाने के लिए. जैसे फ्लैट होता है तो तब पहले क्या होता है? बिल्डिंग खड़ा होता है. देन उस बिल्डिंग का बाद पेंट होता है, ऐसे डेकोरेट किया जाता है. ये आफ्टर, पहले ही नहीं. Yes. सेम वेबसाइट में भी सेम वर्किंग. सो मैं और भी इसमें से बेस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज. थोड़ा आप लोग नॉलेज देख लेना चाह रहे हैं. हम लोग जब मार्क्स टैग करने वाला है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो सीखना जरूरी है. सबका नॉलेज है ये सुन लो बताओ तो. है ऑफलाइन स्टूडेंट आंसर मिल गया है. HTML CSS जावास्क्रिप्ट में किसका किसका नॉलेज है? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में. और किसका नॉलेज नहीं है वो नो लिखना. एकदम फ्री एंड फेयरली बताना. ऐसे बात नहीं है सब लोग यस बोला देन आप लोगों को बोले यस. भावना ओके थैंक यू. एंड अदर्स पूर्वाशा everyone write in a chat box. Do you have a knowledge HTML CSS JavaScript? तो बहुत बढ़िया पूरा सबका नॉलेज रहेगा तो मैं एडवांस लेवल में जा सकता हूँ. उस बेस से एडवांस में जाना मेरा आसान होगा. 3 student reply yes and also offline student reply yes and another. Mathuram okay. 4 student and 5 total 13 student है. Atul Kaushik okay. Tanish तो सबका ही नॉलेज है बहुत बढ़िया. तो HTML CSS JavaScript हम लोग कोड कहाँ पे करने वाला है? Where we are coding मांस्ट मतलब रिएक्ट का अंदर. वी आर कोडिंग इनसाइड रिएक्ट जेएस का अंदर ही हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट का सारे कोड इंप्लीमेंट करने वाला है. ठीक है वही बेस्ट होगा अलग से नहीं. तो अगेन गो. व्हाट इज टैग? व्हाट इज टैग? दैट कॉल्ड टैग राइट. there's an opening tag and also closing tag, and inside tag we write multiple content and also hi hello how are you multiple type of content. What is tag? What is tag? What is tag? Tell me.
acts as a container for content, container for some content. Okay, mark start and end of something. नवदीप, आप भी बताओ कुछ. टैग लाइक है, आप लोग सब लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है. सो आपका बर्थडे में टैग हैप्पी बर्थडे नवदीप, टैगिंग, टैग मेंशन. सो टैग ऑलवेज मेंशन इनसाइड कंटेंट. व्हिच कंटेंट का अंदर किसको मेंशन किया जाता है? एलिमेंट्स. टैग ऑलवेज मेंशन एलिमेंट वेयर इनसाइड कंटेंट, मतलब कंटेंट का अंदर एलिमेंट थ्रू टैग को मेंशन किया जाता है. ओके, वेरी गुड. ओके, एंड टैग का अंदर क्या लिखता है? एलिमेंट. व्हाट्स लाइक एलिमेंट? h1 हेडिंग, p पैराग्राफ, दियर ट्रैक, सेक्शन डिवीजन के लिए डिव टैग, मतलब सेपरेट लेयर के लिए डिवीजन, div layer by layer, one header section, footer, body, div container. Okay, and also what is class, what is id? Very important. What is class, what is id? क्लास क्या है, आईडी क्या है? व्हाट इज क्लास? क्लास का एक यूनिक नेम है. No, एकदम ना. क्लास मल्टीपल कंटेंट. क्लास प्रोवाइडेड मल्टीपल access the multiple element. Class access the multiple element, but id unique. id is a unique. Both is attribute. Class and id both is attribute. Class basically use, you can change different layer, different style, different layer, different style. Then always you class name. You class name take x, y, z, anything user define. Same id basically used for the target trigger purpose. You can change the specific element. You can change this specific paragraph, specific content. At first you target this specific element, then always use id attribute. Okay, then calling in a JavaScript and any places. Class always denoted, class not unique. Very good. Class always denoted dot, class name denoted dot, and id always denoted hashtag. Okay, access कैसे किया था? Hatch. Clear? And next question, attribute. What is the attribute? What is the attribute? Anyone? New student, Gauri, and limited नहीं देगा ना? नहीं. Okay, now okay, properties. हाँ क्या हो? कनेक्ट तो किया. हाँ, hello. Okay, again tell me. Properties. Activities है properties. हाँ ठीक है. Properties or like tell me what is attribute? Try it, everyone. Attribute is a specific word that modify the behavior of the HTML element. Okay. Navdeep, make simple सा आंसर दे रहा हूँ. Attribute working the path definition. Path define. Attribute always define the path. Why? Tell me why is
why you told attribute working in path definition. Just like you want link, hyperlink create, then using anchor tag. So anchor is a tag element. Inside anchor, you can define path. You can define path where href attribute path declaration. Okay. Again, you can insert the image. So where you declare the path, src image src inside declaration path. Okay, that's the attribute. You can change your direction, left to right, right to left, right to left, top to button, button to top. There's a direction change. Then we're using dir attribute direction. Got it? That's called attribute specific got modify the behavior of html element. html के element का behavior को changes करके path को define करता है. Everyone got it? तो HTML से हम लोग ये काम हो जाएगा. बट इसका बाद मुझे इसमें क्या स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है. So then we are using CSS cascading style sheet. CSS provide styling, just like you provide the background color, font size, change font family, also change the outside gap, inside gap. So always use CSS. How many type of CSS? 3 type. कौन सा? inline external और style inline external और Inline CSS, internal CSS, and external CSS. Inline CSS, always called, is inside HTML tag. So CSS attribute is a style. CSS provided with that style. H1 page style is equals to property colon value. Internal CSS always called inside head tag. External CSS outside folder interact with the parent file. Links है. Okay. But अभी एक बात, then nowadays what we are working the framework. What framework? Okay. HTML CSS framework. CSS framework is a bootstrap, tailwind CSS, chakra UI. ये सारे यूज किया जा रहा है. Why? Because CSS कोडिंग ह्यूज लाइन, मतलब CSS में ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, ज्यादा टाइम, और इस वेबसाइट को कम समय में फुल रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए वी आर यूजिंग बूटस्ट्रैप. Just like you create a carousel, multiple product cart, and create model box. Which type of model box is very, very important part. This is a model box. Chat box, if you want to watch, look it. This is this type of model box. And logical integration, then always using the bootstrap. Bootstrap, there is a CSS framework. ये चीज हम लोग क्लासेस में जब भी यूजर्स होगा तब भी इसका एक्सप्लेन करने वाला है, अभी नहीं. मतलब कम समय में predefined bootstrap provided predefined class. Now everyone knows, now at times only bootstrap provided predefined class, but CSS cannot provide predefined class. CSS provide the ID class आप खुद से बना सकते हो, but bootstrap provided predefined classes. Okay, ठीक है, clear? बार बार नेटवर्क चले जाচ্ছে.
Okay, now audible. Okay. Okay, and Bootstrap provided predefined classes. Again, so totally you'll use HTML, CSS, Bootstrap, then create a responsive UI. But how can I convert static website to dynamic website? How can I convert static website to dynamic website? Then that's now create the only static. Then we'll use it backend. Suppose using PHP, hypertext preprocessor, PHP, the backend, and also use the Java backend. But your course is a mass stack. But which benefit of the framework library? And you cannot use the backend framework. So then, at disadvantage क्या है इसमें? Or advantage क्या है? Anybody know? This is the important part. So JavaScript front-end framework. इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है? JS framework which Angular. क्या? Angular. CLI. Okay. And library, we are learning this part, React.js. JavaScript library is a React.js. What is a JavaScript? What is a JavaScript? Anybody know? What is JavaScript? This is a programming language, scripting language. But it's a common part. But what is JavaScript? Main work, principle. What is JavaScript? Helps the create interactive web page. Very good. JavaScript create interactive web page. Okay. Okay. But JavaScript always working is interactive web page. What is the interactive web page? Interactive web page means the logical operation build. JavaScript through हम लोग क्या logical operation build कर सकते हैं. Just like click the chat box, open this content. Again click chat box, hide this content. There's a logical integration, and logical integration always apply condition based if else if, and you can store specific property, specific data where inside container, that's called variable. This variable which type, then use learning data types. सबका साथ देखो सबका relation है. Then you'll apply the condition. Your age is 18, then you'll go to vote. Below 18 you cannot go vote. Then that scenario using the condition if else, and also you use the multiple condition. Then use if else. Okay, ये सारे part हम लोग को जानना है. Then also using functionality, block of code. Without function, you cannot create the logical operation, and you cannot access the DOM. You cannot DOM. What is DOM? This is very, very important part. JavaScript. Document object model. DOM two types: structural DOM and virtual DOM. Structural DOM always implement document dot get element by ID. You can change the HTML property. Then use dot inner HTML. You can change the text dot inner text. इसका थ्रू document dot get element by ID. Specific ID को target कर रहा है, right? Yes. Same. You can change the CSS property style dot value. ये specific provided DOM. That's working the manipulation, DOM manipulation, structural DOM. But we are not working the DOM manipulation. So already DOM predefined. This is my library because React.js is JavaScript web application library. React.js is a JavaScript web application library and is a world fastest library because React.js provided virtual DOM. पहले से ही बना के रहता है. React.js provided virtual DOM. We cannot implement the DOM manipulation. So already
DOM मैनिपुलेशन ऑलरेडी एम्बेडेड, मतलब पहले से प्री डिफाइंड। ओके, ये सारी चीज जानने का बाद हम लोगों को और एक चीज जिसमें आप लोग रिएक्ट जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट दिखाने वाले, ये 6 जावास्क्रिप्ट एडवांस फीचर, इस में स्क्रिप्ट 6, this is very very important because JavaScript ES6 part provided predefined features, predefined function, shortcut tricks, just like you can already function. फंक्शन टू दो तरह का होता है, एक होता है सिंक्रोनस फंक्शन और एक होता है एसिंक्रोनस फंक्शन। Synchronous function, that's called a blocking function. You cannot, blocking function means you cannot pass data one place to another place, but you cannot go one place to another place because अभी इधर से उधर जा पाओगे, block है, then open the door, you can always easily go, because then we are using non-blocking function, totally working React based and backend based, asynchronous function, non-blocking function. You can pass easily data one component to another component because framework library working totally component based. Okay, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अभी तो मैं इसमें एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग एक फ्रंट एंड में एक सिनेरियो, इसको देखो, इसमें बता रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट इस चीज को एकदम ध्यान से सुनना। फ्रंट एंड में आप HTML CSS JS यूज किया, बैक एंड में क्या यूज किया, PHP। you will create a e-commerce based website, another site में फ्रंट एंड में यू रिएक्ट यूज किया, रिएक्ट जिसमें HTML से जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेटेड आगे पहले से, राइट, बस लाइब्रेरी यूज किया, एज अ फ्रेमवर्क यूज किया, एंगुलर यूज किया, मान के चलो जो भी, और बैकएंड में हम यूज किया नोड एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या है? तो HTML CSS JS और PHP से जो भी वेबसाइट होगा इसमें से भी तो सेम होगा, बस उसमें बेनिफिट क्या है, डिफरेंस क्या है, हाउ टू बिटवीन डिफरेंस नॉर्मल लैंग्वेज यूजिंग वर्सेस फ्रेमवर्क लाइब्रेरी। Anybody know? Normal language use किया, language मतलब HTML CSS, और another framework FL लिख दे रहा हूँ, सॉरी FL मतलब फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, समझ में आएगा ना? FL। इसमें बेनिफिट क्या है? लैंग्वेज में फर्स्ट बेसिक लेवल एग्जांपल, लैंग्वेज में ह्यूज कोड, ह्यूज टाइम, लॉन्ग टाइम, ह्यूज कोड, ह्यूज टाइम। जब भी यू कैन डेवलप एनी प्रोजेक्ट, then use huge code, 50,000 more of the code, the huge time basically. Another part, framework library, तो ना इधर पर लिख देता हूँ। इसमें होगा पहला लेस कोड लेस टाइम, बट इससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, बता पाओगे कोई? ये तो सबको पता है। एंड ह्यूज कोड ह्यूज टाइम, कैनॉट प्रोवाइडेड मॉड्यूल पैकेजेस, normally cannot provide मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल, मतलब बिल्ट इन मॉड्यूल रहेगा तो बिल्ट इन पैकेज आपको यूज कर पाओगे, बिल्ट इन मॉड्यूल। फ्रेमवर्क लाइब्रेरी प्रोवाइड बिल्ट इन मॉड्यूल, सॉरी, ओके ओके ओके, ठीक है, cannot provide built-in module, a framework library provide built-in module. Why? ये तो predefined features, एकदम is clear। अभी next point कोई बता पाओगे? Why are you using framework library? Why not using nowadays normal language? ये point, this very very important and core point. Online students, संगीता, गौरी, चांदनी, मिताली, रोशन, अतुल, पूर्वाशा, Tanish, anyone know? And also Navdeep.
This is very important point. আমি এক জায়গাতে আমি একটা জায়গায় কল করবো আগে, যদি এখানে পারমিশন পেয়ে তারপর আমি দেখছি। हाँ ओके बोलो बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज टेल मी। हाँ वेरी गुड छवि ऑलरेडी आई टोल्ड ऑलरेडी तुम लोग क्लास किया था इसीलिए बोल पा रहे हो। वो लोग पहला क्लास किया था मेरा पास एक दिन इसलिए बोल पा रहा है। बाकी लोगों को पता था ये नो पता था सच में बताना। बाकी न्यू स्टूडेंट जिसको मेरा पास कोई डेमो क्लासेस वगैरह नहीं था, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ए सिंगल पेज आप। थैंक यू छवि याद रखने के लिए। चलो एसपीए दिस रीजन ही हम लोग फ्रेमवर्क लाइब्रेरी में काम करता है। एसपीए मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी बताओ तो तुम लोग जो ऑलरेडी टोल्ड डेमो क्लासेस में सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन? सिंगल पेज एप्लीकेशन मींस यू कैन नॉट रिफ्रेश, मतलब विदाउट रिफ्रेश आपका पेजेस सेपरेट हो जाएगा। विदाउट रिफ्रेश यू कैन गो वन पेज टू अनदर पेजेस, you can update any data, any value, one page to another pages easily go without refresh. Then using single page application. और जब pages reload होगा तब क्या होगा? Just scenario, you will create e-commerce website using PHP and also me create e-commerce website using Mern as a mean, anything technology. But your benefit, you create dynamic website, also me create a dynamic website. But difference, but you create, you have 100 pages. You have a scenario, you have 100 pages. So again, click 100 times. So 100 times refresh your pages. 100 times refresh. 1 minute. Hundred time reflect, sorry 100 time reloaded in your pages, मतलब 100 बार तुम्हारा पेज लोड लेगा तब क्या होगा? तब सिनेरियो already your website is hang loaded crash, server is not response, and again next day जैसे गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप करने जाते हो ये सिनेरियो सब लोग फेस किया। Again scenario, we build the mean any framework library. So then you cannot reload because without reload, page updated. Without reload, one page to another page, data passing. And also framework library provided features, routing. Where is the routing feature? Routing is two types. Routing means you can connect one page to multiple pages. Also dynamic way and also static way. Routing two types, client-side routing and server-side routing. Client-side routing provide browser router because client run on browser, and server-side routing provided dynamic method, route method. Which method? Route method. And normally you will use the anchor tag already, HTML. So you can pass data you can pass pages, one page to another page, but you cannot pass data with anchor. But you also passing data one page to another pages, one component to another component. So always use the routing features. This features is provided and also provided tools kits and provided built-in module, built-in function library, packages. ये benefit आपको मिलेगा, ठीक है? And also create the one-way data binding, two-way data binding. Normal language not provided, one-way data binding, two-way data binding. Okay, clear everyone?
Online, reply first in your chat box. Everyone clear? Okay. Hmm? चैट बॉक्स में सब लोग रिप्लाई करो एक बार ऑनलाइन. ओके, मथुरा, मिताली, ये तो ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो गया. जो मैं लिखा इस रिकॉर्डिंग वाइज आप उसमें नोट्स में ऐड कर सकते हो. एडिटर बना के दिया, आप लोग उधर पे ऐड कर सकते हो. जो जो पॉइंट्स आपको ऐड करना है. ऑलरेडी शेयर दिस फाइल in your WhatsApp group description, class notes, and also provide the study material already known. This part totally one to one. You're checking. Okay, and now we are working the framework library. So why not using framework? Why not use library? अब इसमें difference. Now difference framework versus library. देखो इंट्रोडक्शन क्लास में कितना दूर होता है, एक क्लास ले लग जाता है. वो एक 10 मिनट का इंट्रोडक्शन नहीं होता. HTML का कोड पता है सबको, चलो कोड करो, उसमें कुछ नहीं होगा. एक जानना जरूरी था. Yes or no? So how do between different framework library? अभी बताओ फ्रेमवर्क लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या था. सर आपने बोला था फ्रेमवर्क लाइब्रेरी तो दोनों ही तो काम, तो हम लोग क्यों फ्रेमवर्क में नहीं काम करने वाला है. इंटरव्यू तो ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना. इंटरव्यू आस्क्स व्हाई यूजिंग लाइब्रेरी, व्हाई नॉट वर्किंग फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क क्या आपका शत्रु है, एनिमी एनिमी है? नहीं. तो व्हाई क्या कर दिया फ्रेमवर्क आपका साथ, धोखा दे दिया क्या? बताओ. व्हाई नॉट वर्किंग फ्रेमवर्क, व्हाई आर वर्किंग लाइब्रेरी. Simple point. Framework provided complex code because framework working is TypeScript based. Because class based. Class based means TypeScript based. Okay, access very complex way. But library simple working JavaScript function based. Simple answer. Library normal JavaScript working JavaScript function based. And framework में क्या आपको डिफरेंट फोल्डर में जाके फाइल बना के एक्सेप्ट करना पड़ेगा. पर लाइब्रेरी में एक फाइल का अंदर ही आप सारे काम हो जाएगा. मतलब you can embed HTML code, JavaScript code, TypeScript code, CSS code, all code embedded one file. इसके लिए अलग फाइल नहीं बनाना पड़ेगा. And mainly library provided built-in function, built-in module, and module 3 we can accept it built-in packages and apply the all packages built-in function. Okay, ये benefit है library में. And library Java, we are working the JavaScript library. React is a world first library. Okay. And next आपका कोर्स है मान स्टैक. सबका फुल फॉर्म पता है? एम फॉर क्या होता है? एम फॉर MongoDB. E for Express.js. R for React.js. N for Node.js. Okay. MongoDB, Express.js, React.js, Node.js. Got it? What is the MongoDB? What is the Express? What is the React? What is the Node? First, मैं R से start कर रहा हूँ. What is React.js? React.js is a JavaScript library. Client-side JavaScript web application library, not mobile application. This application, web application library. You can build web application only using React.js because React.js is a client rendering, not a server rendering. React.js is a client rendering, not a server rendering. You can also integrate server rendering in React.js. So do you know React.js framework? Next.js. What is it? React.js framework, Next.js. Next.js is both client and server rendering. So at first you needed which code? React.js. Basic code पता है तो आप खुद से ही कर पाओगे. And also you developed Android application. How can I? Very easy. You have knowledge in React.js, so you can easily develop Android because logic same, syntax difference. Because React.js framework, React Native built mobile application. JavaScript framework, mobile application. Okay.
मतलब रिएक्ट जे सीखने से क्या बेनिफिट मिल रहा है, आप 3-4 लैंग्वेज अब खुद से बना पाओगे, मतलब काम कर पाओगे, नॉलेज रहेगा तो। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज है इस रिलेटेड चीज, कंपोनेंट, बिकॉज रिएक्ट जेस फ्रेमवर्क लाइब्रेरी टोटली वर्क इज किस बेस, कंपोनेंट बेस। कंपोनेंट बेस मींस प्रोवाइडेड, मैं इसमें और भी इन डेप्थ में जाके नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन करूंगा, मतलब डिस्क्राइब करूंगा जब प्रैक्टिकली कोड होगा, मैं अभी नॉर्मली थोड़ी बता दे रहा हूँ। कंपोनेंट प्रोवाइडेड टू टाइप, एक पेरेंट कंपोनेंट और एक चाइल्ड कंपोनेंट। फ्रेमवर्क लाइब्रेरी फॉर्मूला, प्रीडिफाइंड फॉर्मूला, फ्रेमवर्क लाइब्रेरी बोथ प्रोवाइडेड पेरेंट कंपोनेंट, पहले से बना के देता है, provided predefined parent component. Parent component name is app. You use a JavaScript app.js by app.jsx, and also use TypeScript app.ts, app.tsx. Predefined. When you can write code, कहाँ पे बनाना पड़ेगा? You will make file child, home, about, और ये सारे child, मतलब जितना भी child component रहेगा, child component को parent component में import करना है, तभी जाके output मिलेगा. So working flow React provided data parent component to where child component. So you can also pass data child component to parent component, then always use props. ये अलग पार्ट है, रिवर्स। ओके, ये तो यू बिल्ड रिएक्ट जेस से क्या यूआई बना लिया, यूआई यूजर इंटरफेस, यूआई बिल्ड। नेक्स्ट बैकएंड, यूआई तो बिल्ड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अभी आपको स्टैटिक, अभी तक नॉट ए डायनामिक, स्टैटिक। You can static website, the converted dynamic website, then use JavaScript script backend server side is Node.js. What is a Node.js? JavaScript server side open source library plus runtime environment. Node.js is open source and cross platform. What is open source? What is cross platform? This is very, very important question. Tell me. What is open source or what is cross platform? Online student, reply first. Very, very important, crucial, important. ओपन सोर्स में तो क्या आपके पास कोड अवेलेबल है, ओपन सोर्स मतलब क्या है, पहले बताओ, आपको कोड मिल जाएगा। देखता हूँ। ओके, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बार आप लोग पढ़ चुका है, पाइथन में, पाइथन, जावा, जो भी सी क्या, कभी ना कभी तो ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म हमारे जावास्क्रिप्ट बेसिक में तो पढ़ा है। ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट भी रन होता है वेट इंजन के ऊपर, नोड भी रन से वेट इंजन। ओपन सोर्स मींस यू यूज द, हर जगह पे यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स मींस आप हर एक ब्राउजर्स बोलो, क्रोम बोलो, मल्टीमीडिया बोलो, एज अ फ्री पेज आप सारे जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको एक्सेस कर पाओगे पब्लिकली। एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस नॉट ए ब्राउजर, क्रॉस प्लेटफॉर्म में अलग अलग डोमेन, मतलब हर एक टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब ये मान जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेशन है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का भी इंटीग्रेशन हो पा रहा है, नोड में भी इंटीग्रेट कर पा रहे हो, एक्सप्रेस में भी इंटीग्रेट कर पा रहे हो, एंड आल्सो इंटीग्रेट ईजीएस, व्यू टेम्पलेट इंजन, अनदर पीएचपी में भी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, एआईएमएल में भी इंटीग्रेट कर पाओगे। दैट्स कॉल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये परफेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, सब लोग का क्रॉस प्लेटफॉर्म का डेफिनेशन क्या, अलग ब्राउजर, ये रॉन्ग डेफिनेशन। ठीक है, एंड Node.js, why needed Node.js? You will create the dynamic server. आप खुद से सर्वर बना, you can make, but you can create your own server. So always use Node.js. मतलब खुद से आप सर्वर बना सकते हो. You can create the own server using Node.js. Everyone clear? Online student? Okay. Next part is Express.js. What is Express.js? Express.js is a Node.js framework. Express.js is a Node.js framework. So you can also build the dynamic website and also create API, application programming interface, also make the dynamic server, also make the API, then use Express.js. Okay, मतलब Express.js से हम लोग API and dynamic server बना सकते हैं, and also use M for MongoDB. So already told two type database. SQL means structure query language, because structure means you create the tabulate form and pass the query.
just like insert, view, delete, update. But another part, NoSQL is a not structure query language, not create a structure, not create a tabulate, the provided dictionary type of data JSON. Okay, and not pass the queries. NoSQL provided built-in function, just like you display all data, find method, display one data, find by ID, and updated find by ID and updated find by ID and delete. Same types of, okay, insert one, insert many, provided the built-in function. Okay, and NoSQL loading more than SQL, and NoSQL uses hybrid application, Android and app both. Clear? Clear? All online student reply fast. And local database already told, the local storage. जब तुम्हारा you can go, you can working the project in your company as per your company. So backend developer not provided API. So how can I work? How can I connect? How can I register data? So that scenario, then we are using local storage. Already HSB दिखाओ local storage using local server. So create the static token and local storage store the all value. Okay. Everyone clear? ये था हम लोग introduction. क्या? ये था introduction. कंप्लीट इंट्रोडक्शन, एंड आगे जाके इस बेस हम लोग काम करने वाला है. एंड नेक्स्ट आज का जो टॉपिक बचा है उसका नाम है, आज हम लोग 11:30 तक ही है, मैं आज 12 बजे तक कराऊंगा बिकॉज मेरा पास टाइम है. तो नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक इज इंस्टॉलेशन. क्या? इंस्टॉलेशन कोड कैसे करोगे. वी नीडेड कंपाइलर जिसमें we can write the code where is a compiler through which compiler. VS Code सबका सिस्टम में है, yes or no? VS Code here, everyone I think done. Okay, and also use extension. Which extension? Babel JavaScript inside VS Code, because React script start by Babel JS and also ES7 plus. Okay, React Native, Redux, ये वाला पार्ट को इंस्टॉल कर लेना बिकॉज शॉर्टकट की कोड के लिए. And also we are working framework library. Then at first we needed which? We needed Node.js. We needed Node.js download. Why needed Node.js? The installation download. Anybody know? Everyone download Node.js? Yes or no? सबका सिस्टम में Node.js डाउनलोड है तो इसको डाउनलोड करना अभी कर लो. ऑलरेडी मेरा है. Anyone share your screen? Online should anyone share your screen? I'll suggest how to download Node.js. तो मैं और फिर से कर ही लेता हूँ. चलो दोबारा हो जाएगा, मतलब दिखा सकते हैं कि ये ना दिखा देगा पूरा. Now Node.js download. Without Node.js download, what is the Node.js? The scenario, you will work the framework library base. You're working on framework library base, totally working module base. Which base? Module base. So backend provided the node modules folder. Provide the node modules folder. Node modules folder stored all built-in module, and this module provided built-in packages. Why store the built-in packages? All package inside package.json file, inside dependency object, all built-in packages stored. So Node.js always provide built-in module and also provide built-in package, because framework library always work which base? Module base. You cannot use module, you cannot install module not working your Node.js framework library code. So then Node.js download, and next check how to check version, node page -v, then version check. And also Node.js is a module, and just like देखोगे रास्ते में जब गाड़ी कौन चलाता है? कार ड्राइवर राइड इन कार, राइट? driver driving a car. Same things. Node.js package handler provided npm. Node.js package handler name जो package को handle करता है, name is npm. npm means node package manager.
जितना भी global package, you can install any global packages, then always use npm install package name. क्या होगा? npm install package name. Okay. Download Node.js and which version? 20. I will provide 20 because 22 में भी होगा, but I will refer the 20 version. This is now stable, working, best. Okay. नहीं तो कोई कोई सिस्टम में पैकेज इशू भी आ सकता है, तो 20.80.1 इसको डाउनलोड कर लो. एंड विंडोज, जिसका विंडोज x64 आर्किटेक्चर एंड विंडोज इंस्टॉलर MSI. Okay. Right click Windows installer online student. Noted this, and everyone install and download Node.js. Okay. Done. And now already done the Node.js version 20.18.1 and click Node.js version and open welcome to the Node.js setup. Okay. And next and repair. Already मेरा था, इसे repair. आप लोगों को डायरेक्ट आ जाएगा फिनिश. नेक्स्ट करने के बाद फिनिश. ओके. एवरीवन डन इट. मतलब इसको फॉलो कर रहे हो तो यस, पॉपअप आएगा, यस कर लेना. ठीक है. एक पॉपअप आएगा, देन यू गिव द पॉपअप यस. एवरीवन क्लिक द यस बटन बस. तो करना है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स. Next. हाँ, necessary click. No, not be necessary. Next. Directly next click. Not click the checkbox. Not necessary. Finish. Done. After finish, how can I check my Node.js version and Node.js working in framework or library? How can I check? Anybody know? Okay, very good. Where check? Terminal. Already check the CMD command prompt, but already CMD command prompt then right. But we are working on work terminal based. So at first we needed the check where terminal. So everyone go the terminal where the inside VS Code. So open VS Code. Okay. React का file है. ठीक है. This is my terminal. That is the terminal. इसमें काम होता है, इसको अभी नहीं देखना है, जब हम लोग काम करने तब भी. So this is my terminal. How to check Node.js version? Everyone write in the terminal, inside terminal, node space -v. So which version available? Now check it. 20.18.1. Okay. Done. Everyone get output, yes or no? Why is showing node not recognized? Yes or no? Yes, sir. I'll solve it. And again, node package manager is a package handler. This is called Node.js driver. So all global packages always install in where npm through npmi all packages name and check version 10.8.2. Okay. So everyone check your Node.js version. Everyone get output yes or no. And which message is showing the node not recognized? Node not recognized. किसका शो हो रहा है बताओ. Tell me. Node not recognized किसको शो हो रहा है. Tell me online. जिसको नोट नॉट रिकॉग्नाइज शो होगा, नहीं होगा तो डन. ओके. तब यू कैन नॉट वर्किंग टाइम फ्रेमवर्क लाइब्रेरी. बट हाउ कैन आई सॉल्व इट? How it solve it? Easy way. This very simple step. Online student, please reply first. Showing Node.js version, yes or no, please. Then I'll go आगे जा पाऊंगा. संगीता, अतुल, छोवी तो already done. Mitali, Mithuram, Purvasha, Roshan, Tanish. Reply in your chat box. What is your status? Node.js working properly, yes or no? Okay, done. Version is already showing. Okay, very good, Roshan. Purvasha, okay. Anybody, no problem?
So only all offline students now they were showing the facing the problem. Note not recognize. Anywhere online student anyone is facing this problem, this very easily tricks. Not needed uninstall, not needed delete. तो जैसे ही इसको प्रॉब्लम आएगा, everyone goes where? Type to search here and searching Windows PowerShell, which write Windows PowerShell and click Windows PowerShell, open and again check Node.js version and npm version. So write Node space -v, okay, and again check. Done. All right. Yes. npm -v, okay, that's so. Then okay, now remove it, okay, and remove VS Code, and also remove VS Code, and again open VS Code. Again open VS Code, okay, and inside terminal, how check? Again check. Now check again. So 100%. आ गया ना? It tricks. Not. I'll check the chat GPT. Not Stack Overflow. ये खुद से दिमाग से मैं निकाला ये ट्रिक्स. काम आ गया. ये मेरा साथ भी पहले प्रॉब्लम हुआ था. मतलब 2-2.5 साल पहले तब देखा था. और भी प्रॉब्लम जैसे 22 पैकेज को भी मैं सही कर दूंगा. जिसका सिस्टम में 22 पैकेज जैसे नहीं हो रहा है उसके लिए कुछ पाथ आई विल प्रोवाइडेड पाथ. उस पाथ को एक बार इंस्टॉल करो, लाइफ टाइम चलेगा. दैट्स यूर जस्ट लाइक इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट करता हूँ कैसे इसको गिट लाइब्रेरी से, गिट बेस लाइब्रेरी से इसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है. जो कौन सा लाइब्रेरी पैकेज को कौन सा कैसे हिट किया जा रहा है. या लाइब्रेरी टेस्टिंग अलग अलग सिलेबस है. ठीक है. ओके, नाउ you are available working on the React.js. Okay, so how to check your code is working is not? Where I'll get output terminal. How to check? Just like I create a file, where main file, just like demo.js. Okay, and how to check? Print in local server and a backend console log. Console log is a debugging purpose. Already know JavaScript. console.log चेक के लिए वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है आउटपुट टर्मिनल में. हाय ऑल दिस मैसेज. हाउ टू गेट आउटपुट वेयर? इनसाइड टर्मिनल एंड क्लिक द प्ले बटन. हाय ऑल. एंड जिसका नहीं आ रहा है यू नॉट गेट आउटपुट. सो वी नीडेड द सेटिंग and settings, where search setting, go the extension, inside extension, where we go run code configuration, where we go run code configuration. And so terminal. ठीक है, सेटिंग का बाद कहा टर्मिनल. टर्मिनल कहा है? रन कोड कॉन्फ़िगर आ गया ना. ये देखो ऑलरेडी चेक इट. इसका नहीं रहेगा ये ऐसे रहेगा. इसको क्या चेक कर लेना है. देन सो द आउटपुट इन योर टर्मिनल. ओके ओके ऑनलाइन स्टूडेंट. So thank you. So I'll give attendance now. And next class we are start how to install React.js folder structure. Okay, and explain React.js all directory and all files, why needed, why not needed, and how to work, but how to apply basic HTML, CSS, JavaScript code in your React.js folder and how to embed it. Okay, everyone clear? First to last reply everyone in your online student in your chat box. First to last we are discuss with these topics and which we are discussing all topics. So everyone clear? Please reply first to last. Okay, Mathuram. Thank you, Roshan. Navdeep, clear? Okay. चलो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप रखता हूँ. ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा रात 10 बजे.